Good morning people, it's 8 October 2020 and we are at Kedarnath. हम लोग यहाँ कल शाम को पहुँच गए थे. So today's task is we're gonna head to Vasukital trek. Hopefully we're gonna make it. So यहाँ से Kedarnath to Vasukital is 9 kilometers. So up and down is like 18 kilometers, more so yeah. So let's see. We're gonna go there and मौसम भी बहुत साफ़ है. So I'm gonna catch you later. Bye. केदारनाथ. कौन सी केदारनाथ? जो मेन केदारनाथ. We just started our trek. हम लोग वहाँ से स्कूल से होते हुए ऊपर जाएंगे. हम लोग वासुकीताल की ओर बढ़ चुके हैं. सो आई एम विद माई ब्रदर नितांश, माई डैड और दो लोग और जुड़ चुके हैं हमारे साथ. दोज गाइज आर फ्रॉम कुमाऊं. लेट्स सी, लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग. Vasukital is a high-altitude glacial lake trek situated at the height of 14,200 feet in Kedarnath Range, Uttarakhand. All good? Yes. Papa? भाई बागमती के मार्ग ऊपर आ रहे हैं. मोरेन से ऊपर केदारनाथ का ग्लेशियर और जस्ट ऊपर है chaurabari और स्टेट है केदारनाथ पीक. उसका बैक साइड में है केदार डूम और आपका लेफ्ट साइड में और पीछे है बहरतकुंड पीक. और केदारनाथ के पीछे है जस्ट केदार डूम पीक और गंगोत्री रीजन. बस. Okay. This entire valley is full of herbs and Himalayan flowers, especially Brahmakamal, which is the state flower of Uttarakhand, and one can only find it in higher altitude of Himalayan ranges. Already, and you can see it's a beautiful sunrise of Kedarnath. We can see right now. और मेरे पीछे है केदारनाथ माउंटेन. एंड अभी हम लोग वासुकीताल ट्रैक के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं. इट्स वेरी स्टीप क्लाइंब टिल नाउ. लेट्स सी फर्दर. बाय. My name is Usha from Ravaredi. एंड आपको यहाँ का ट्रैक कैसा लगा अभी तक का? अभी तक का तो बहुत ही अच्छा है. बाकी वासुकीताल जा रहा हूँ, देखिए कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे. ओके, दैट्स नाइस. ओके, इनके दो मेंबर्स और हैं ऊपर पहुँच चुके हैं. अनुप शुक्ला एंड अनुराग शुक्ला. ओके, उनका भी फर्स्ट टाइम है? यस, फर्स्ट टाइम. ओके, नाइस. व्हाट अबाउट यू नितांश? ऑल गुड? हम लोग थोड़ा सा केदारनाथ से ऊपर आए हैं. अभी काफ़ी बचता है, आई गेस 6 kilometers around. So we are just taking a break, short break, then we'll start again. Let's see.
वासुकी रिवर जो वासुकी ताल से होके आ रही है, वासुकी ग्लेशियर से। हम उसी रूट में जा रहे हैं। हमारे साथ 3 लोग और मिले हैं हमें ट्रैक पे। ये लोग थोड़ा गलत रूट में आ गए थे, हम इनके पीछे पीछे गलत रूट में आ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट रूट, जो कि हमें ये वासुकी रिवर थोड़ा सा क्रॉस करना है। यहाँ से थोड़ा सा पानी वगैरह हो रहा है, उसके बाद इधर क्रॉस करके ये आपको वो The first and last point of water resource is just 3 kilometers above Kedarnath, so make sure you carry enough water and food and always keep yourself hydrated, as you won't be able to find any water resource beyond that until you reach Vasukital. Just look at this view, guys. Kedarnath mountain, so near, so gigantic. I just love to be in the mountains. Honestly, ये पूरे COVID-19 situation के वजह से 8 महीने से I was not able to go to anywhere, especially to any mountain. So right now, while climbing towards Vasukital, I cannot express my feeling how happy I am, and especially when I'm doing this trek with my brother and my dad. Vasukital trek is considered as difficult gradient because of the steep climb and higher altitude. Distance from Kedarnath to Vasukital is 9 kilometers. So if you are not planning to camp near Vasukital, you have to descend to Kedarnath on the same day. We have just stopped for a small break. We are eating some parathas. होटल से कुछ पराठास पैक किए थे क्योंकि रास्ते में तो obviously कुछ नहीं होगा. So yeah, small break and then we'll start again. I highly recommend you all to take a local guide with you, as the climb is very steep and full of boulders, and one can easily get lost in a cloudy weather. हम लोग आए हैं इधर नीचे से रूट लेते हुए, and we have to go towards this route. Finally reached to Vasukital. Yeah! Awesome feeling. Let's just go down now. Guys, we have finally reached to Vasukital. It's almost 12:45 a.m. and we started around 6:30 a.m. It's almost like 5 hours. But I'm very happy. You can just see the view. I can't explain it in words. It's amazing. Very beautiful feeling. Vasukital is considered extremely holy place for trekkers as well as pilgrims. As per Hindu mythology, Lord Vishnu descended onto this lake to take a bath on the auspicious day of Raksha Bandhan.
Hello, amazing people, and with lots of excitement, we have finally summited the Vasukital lake. And as you can see, this is the lake which is in the top of the mountain. And there is a historical, mythology that in this lake, particularly, the god and goddess used to visit. It's one of the most sacred lake for Hindus, and I think I'm gonna just end my video here. That's all. This was my final summit, I can say, final destination that I wanted to visit, Vasukital. And next day we will be heading back to Dehradun. That's all, and hope you guys stay safe, stay healthy. Bye bye.